Two Kinds is a short story from the book The Joy Luck Club by Amy Tan. It was first published in 1989. लघुक था मुख्य चरित्र जिंगमी जून वू के बचपन और उसकी मां के जीवन की उच्च उम्मीदों के प्रभावों को रेखांकित करती है। यह स्पष्ट है कि लघुकथा में कुछ घटनाएं लेखक के जीवन में घटित घटनाओं को दर्शाती हैं। टू किंग्स अमेरिका में एक महान जीवन की उम्मीद कर रही एक मां और बेटी के बारे में बताती है। बेटी जिंगमी गायन और नृत्य का अपना कैरियर बनाकर चीनी शैली मंदिर बनना चाहती है। उसकी मां को इस विश्वास में भस्म कर दिया जाता है कि जिंगमी एक प्रतिभाशाली है। इस तरह उसे व्यर्थ परीक्षण करना पड़ता है कि वह 99 विलक्षण बच्चों को पत्रिकाओं में ऐसा करते हुए देखती है, जैसे कि उसके सिर पर खड़ा होना और विश्व की राजधानियों का पाठ करना। यह सब बेकार साबित होता है और यह विचार तब तक फीका पड़ने लगता है जब तक कि जिंगमी की मां अपने पड़ोसी मिस्टर चोंग के साथ जिंगमी को पियानो सबक लेने का फैसला नहीं कर लेती। पूर्व पियानो वादक, हालांकि, बहरा है और खराब दृष्टि है। विकलांग शिक्षक होने के नाते उसे खेलने की क्षमता देता है जैसा वह चाहता है और अंत में नहीं सीखता है। एक प्रतिभा शो का आनंद लेता है और उसकी मां उसे उसके दोस्त लिंडो जोंग की ओर गर्व से संकेत देती है, जिसकी बेटी एक विलक्षण महिला खिलाड़ी है। वह प्लेइंग चाइल्ड नामक एक गीत बजाती है और बिल्कुल भयानक है। उसने सोचा कि उसकी मां पागल हो जाएगी क्योंकि पूरा शहर वहां देख रहा था। जिंगमेई को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी मां ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में उसकी मां पूछती है कि क्या वह पियानो के पाठ में जा रही है। यह सोचकर कि उसकी मां के लिए यह धारणा काफी खराब थी कि वह छोड़ना चाहती थी, उसने मना कर दिया, उसे जाने के लिए मजबूर करते हुए। जिंगमेई कहते हैं, काश मैं कभी पैदा नहीं होता, काश मैं मर गया होता। जैसे कि उसके बच्चे चीन में इसने अपनी मां पर एक खाली चेहरा छोड़ दिया। जो उसकी बेटी ने टिप्पणी की थी, पियानो का पाठ बंद हो गया था और उसे अपनी मां के सामने कोई भी तुच्छ परीक्षण करने को मजबूर नहीं होना पड़ा था। उसकी मां मर जाती है और एक वयस्क के रूप में जिंगमी को पुराने पियानो और उसके नोट्स लेने के लिए कहा जाता है। वह पियानो को अपने घर में ले जाती है और अपने पुराने संगीत के माध्यम से खेलना शुरू कर देती है। वह पाता है कि प्लेइंग चाइल्ड गीत उस गाने का आधा हिस्सा था जिसे वह बजा रही थी। अन्य आधे को पूरी तरह से संतुष्ट कहा जाता था। सारांश का अंत हिंदी में। Two Kinds is a short story from the book The Joy Luck Club by Amy Tan. It was first published in 1989. The short story outlines the main character Jingmei, June Woo's childhood and the effects of her mother's high expectations for her life. It is clear that some of the events in the short story reflect events that happened in the author's life. For example, the main character's mother left China, leaving behind her family and children. The same is true with Amy Tan's mother. In 1993, a movie based on the book was made. Two Kinds tells of a mother and daughter expecting a great life in America. The daughter, Jingmei, desperately wants to become a Chinese Shirley Temple by making her career of singing and dancing. Her mother is consumed in the belief that Jingmei is a genius, thus making her do pointless tests that she sees other prodigy children doing in magazines, such as standing on her head and reciting world capitals. All of this proves to be useless and the idea begins to fade away until Jingmei's mother decides to make Jingmei take piano lessons with her neighbor, Mr. Chong. The ex-pianist is, however, deaf and has poor eyesight. Having a teacher with disabilities gives her the ability to play as she wants to and ultimately not learn. A talent show ensues and her mother signs her up out of pride toward her friend Lin Dojong, whose daughter is a prodigy chess player. She plays a song called Pleading Child and does absolutely terrible. She thought her mother would be mad because the whole town was there watching. Surprising to Jingmei,
Her mother says nothing to her about the recital. Later, her mother asks if she is going to the piano lessons. Thinking that the recital was bad enough for her mother to have a notion that she wanted to quit, she declined, forcing her to go. Jingmei exclaims, "I wish I had never been born. I wish I were dead, like them, her babies in China." This left a blank face on her mother. Horrified by what her daughter had remarked, the piano lessons had stopped. And she didn't have to do any of the trivial tests her mother had forced her to do before. Her mother dies, and as an adult Jingmei is asked to take the old piano and her notes. She takes the piano into her home and begins playing through her old music. She finds that the song Pleading Child was only half of the song she had been playing. The other half was called Perfectly Contented. Significance of title. The title Two Kinds is referred to by Jingmei's mother when she stated that there are only two kinds of daughters: those who are obedient and those who follow their own mind. She gives an example of the kind of daughter that she wants Jingmei to be, and the kind that Jingmei is being. Jingmei herself also refers to the title of the story, but she does this at the end and with a lighter tone. She does it by using two different pieces of music: Pleading Child and Perfectly Contented. These two pieces are different, but Jingmei says that, after I had played them both a few times, I realized they were two halves of the same song. End of the book review. Thank you.